One visa for 26 countries. Isn't that amazing? 3 easy steps to get Schengen visa. Step 1, Step 2, Step 3. स्पेन इज द मोस्ट विजिटेड कंट्री। आज मेरा वीडियो है टूरिस्ट वीज़ा पे। जो लोग ऑलरेडी स्पेन में रह रहे हैं और अपनी फैमिली पेरेंट्स को विजिट वीज़ा पे लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है। शेंगेन वीज़ा पे जनरल गाइडलाइन देते हुए मैंने बहुत वीडियो देखे हैं, लेकिन किसी भी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये वीडियो आपको सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। हेलो फ्रेंड्स, होला अमीगोस, वेलकम टू स्पेन भ्रमण। आपको विजिट वीज़ा पे फैमिली को लाना है, टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कतें आ रही है, एजुकेशन सिस्टम इंग्लिश और स्पेनिश और बिलिंगुअल चूज़ करनी है, बच्चा स्पेन में बॉर्न हुआ है और उससे रिलेटेड प्रोसेस लाइक बर्थ सर्टिफिकेट एक्सेट्रा अप्लाई करनी है, स्पेनिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, डिपेंडेंट वीज़ा की इंफॉर्मेशन चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, स्पेन में फाइन क्यों लगती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेके मैं आ रही हूँ स्पेन भ्रमण चैनल पे। जिन्होंने स्पेन भ्रमण मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है जब हम नए देश में आते हैं तो वहाँ की रूल्स रेगुलेशन, टैक्स एंड एजुकेशन सिस्टम समझने में बहुत सारी दिक्कतें आती है। हालांकि मैं मैड्रिड में 12 साल से रह रही हूँ और इन सब मुश्किलों से मैं गुजर चुकी हूँ। मेरे पेरेंट्स मैड्रिड में 3 बार विजिट वीज़ा में आ चुके हैं, तो मुझे पता है इस बारे में क्या दिक्कतें आती है, मुश्किलें आती है। इस वीडियो के जरिए हम विजिट वीज़ा की प्रोसेस जानेंगे। We have many queries how to apply, where to get documents and everything. With this video, we are going to clarify all your queries. It's very easy process, only we need to understand. As I mentioned here, there are 3 easy steps for tourist visa. Step 1, to get invitation letter. Second step, courier all these documents to India. And third one, to submit documents at BLS. Let's start with step 1. Let's discuss documents one by one. First step involved is to get invitation letter from Spain government, that is called as Carta de Invitación. You will get it from police station. For that you need to get an appointment. This is the link. I have mentioned this link in the description box also. Appointment first. Depends on where you live, you can choose the area. For example, I am staying in Madrid, so I will say Madrid. Accepta, that means accept. Then here, Policia Carta de Invitación, that means invitation letter. Then accepta, that means accept. Then these are the documents required. I will explain you later. Then you will say entra, that means enter. Then you have to put your details, the passport number, and then your name, accept. Okay, then this page will appear. It says solicitar cita, that means get an appointment. Okay, it says en este momento no hay cita disponible, that means the appointments are not available. So there is another way to get appointment. In Google you can type police station near me. It will show the location where are the police stations. Okay, I am staying in this area, Fuencarral, El Pardo. This is the police station near me. Okay, and this is the number. Just call this number and they will provide appointments. If appointments are not available in that police station within your time frame, then try to check in another police station, call them and ask for appointment. If not, then you can do one thing, you can prepare a whole document set and directly go there and try your luck. Documents for invitation letter, application form, padron, home rental agreement, NI card,
passport copies of invitees, TASA, personal letter, optional letter salary slip and income tax return. First is the form. Here we have to put your detail. If you are inviting 3 people, then you have to fill 3 different forms. This is example of padrón copy. In Spanish we say padronamiento. To get this padronamiento, you have to register with the local municipality. TASA. That means fees. We can pay this fees by 2 ways. One by online. Another way is you can request this form from police station. They will mark the amount. Depends on the number of people you are inviting. Just pay this amount in any bank and submit this copy along with the rest documents. You can pay this fees online. Just type in Google Modelo 790 Código 12. You will get this. Click here. Again click here. Okay. Fill it here. NI, name, address, and then here solicitud, and then Madrid date, and put it in your account detail and descarga. That means submit. After submit, a PDF will be generated. Take the print and take this copy along with other document. Next document is personal letter. Just mention that you would like to invite your parents or family. Just mention their passport numbers. Also mention that you are going to bear the expenses and they will stay with you. You should give 2 to 3 months for this process. Invitation letter process around 1 month. Courier. Documents to India around 7 days. Process for submission and visa around 1 month. यदि आपके पेरेंट्स फैमिली दिसंबर में आ रहे हैं तो आपको ये प्रोसेस सितंबर से शुरू करनी है. Now you have invitation letter. So we are done with first step. Let's start with step 2. Document from Spain, invitation letter, residence card and passport copy, bank statement, income tax return, salary slips, cover letter, medical reports if any. Medical reports if any means a lady is in Spain and she is pregnant, and if she want to call her parents or in-laws, then she can include her pregnancy report. Submit these medical reports along with rest documents in India. Also mention in cover letter you are inviting your parents for some support, and then this document will work as a strong document and your parents will get visa easily. So already we have completed 2 steps. That means to get invitation letter, and second one to send all documents to India. Let's start with step 3. Document to submit at BLS India, visa form, sworn declaration, authorization, courier form, insurance, passport, return tickets, payment visa fees, document from Spain. In case of parents income tax return and bank statement. In case of family, wife marriage certificate and children birth certificate. They have given all the detail, the visa fees, documents required, checklist, the photo specification, processing time and form. You have to fill all this form and just submit on appointment date. You should correctly mention travel dates in visa application form. These are the centers in New Delhi and Mumbai. ट्रैवल इंश्योरेंस आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं. इंश्योरेंस शुड बी एज पर ट्रैवल डेट्स. पासपोर्ट एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए. फ्लाइंग टिकट में फ्लाई इन डेट और फ्लाई आउट डेट प्रॉपरली होनी चाहिए. आपको वीज़ा 90 डेज का मिलता है तो रिटर्न ट्रैवल डेट भी अकॉर्डिंगली होनी चाहिए. We can see on the BLS web page, we can get visa within 4 working days, but we have to fill all the details correctly. It may take 15 days to 45 days also if you provide incorrect information or some documents missing. So be careful. इंडिया में बहुत सारी टूर ट्रैवल एजेंसीज है तो आप BLS में सबमिशन का टास्क आप इन्हें दे सकते हैं. ये आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे. They charge minimum fees and you will be stress free. Just follow these 3 easy steps and I am sure
You will easily get tourist visa for your family or parents. Thank you. मैंने सभी क्वेरीज को डिटेल में बताया है। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए। मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।